Assalamu alaikum, dear students. So far now, we have discussed various aspects of Hamlet. We have looked at Hamlet as a revenge tragedy, and we have seen that how it is based in the Senecan tradition of revenge tragedy, and how uh, it is an offshoot or further development of the Spanish tragedy play that was written by Thomas Cade. And we have also discussed Hamlet as a tragic hero. We have discussed the story of the Hamlet. Now we have to go beyond your textbook. Now, all the things that are written in the textbook are not enough when we are talking about literature, particularly when we talk about literature and particularly when we talk about drama. So there is a variety of things that is not there in the textbook, but being students of literature, you have to know about it. For example, you have studied a course on English literature in which you know that every piece of literature, uh, if it is a drama or it is a novel or it is a short story, it has a plot, it has characters, and regarding the characters there is particular art of the characterization you have discussed. You also know about various types of characters that are constructed by the writers, and every piece of writing it has a theme जो होता है, it is a leading idea, it is a topic on which a piece of literature is written. It is the idea that is conveyed through a piece of literature and that is repeated in a piece of writing. So, regarding Hamlet, we are going to discuss its theme. The first and most foremost theme of the play Hamlet is mortality. By mortality, we mean that we are mortal beings, we do not live here forever, and we have to die one day or we die. यानी कि मौत जो है दुनिया फ़ानी है. बेसिकली मोर्टेलिटी का मतलब ये है कि दुनिया फ़ानी है और इंसान जो है वो हमेशा रहने वाला नहीं है. रादर वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आता है एंड आफ्टर दैट टाइम पीरियड ही हैज़ टू लीव दिस वर्ल्ड. ठीक है. नाउ हैमलेट के अंदर आपको थीम ऑफ mortality जो है it is one of the central themes. How is it central theme? We come across this theme in a number of ways. For example, the first, in the opening scene we come across the ghost of Hamlet's father. Now Hamlet's father has died. It means that all individuals, they do not live forever, whether they are kings or whether they belong to upper class of society, whether how important, no matter how important they are, no matter how high in the society their position is, they have to die. The prime example is the King Hamlet. He's the king of Denmark and he has died, and his ghost appears. Then we have Hamlet, who is contemplating suicide because he's unable to take revenge or because he's unable to take action. Action वो नहीं ले सकता, तो इस वजह से he contemplates कि वो suicide कर लेगा. Then we have Ophelia's suicide again, theme of mortality, that every living being he or she has to die. Then we have Hamlet, जो कि उसकी टेंडेंसी है again to wear the black dress जो है it is sign of mourning. mourning जो होती है वो obviously अफसोस, और अफसोस किसी के डेथ पे किया जाता है, तो again ब्लैक ड्रेस जो है इट इज साइन ऑफ mortality. उसके बाद जो प्लेयर्स हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस है, प्ले द मर्डर ऑफ गोंजागो, उसके अंदर अगेन आपको पता है कि डेथ होती है. जो प्लेयर किंग है ही डाइज एट द हैंड ऑफ अ मर्डरर. ठीक है. इसके बाद आपको वहाँ पे ग्रेव का सीन दिखाई देता है. ग्रेव अगेन इज sign to the human beings that this is the place where you have to return. So all human beings, they are mortal, they are not immortal. उसके बाद फ्यूनरल आता है. फिर एट द एंड ऑफ द प्ले जो आखिरी सीन है उसके अंदर काउंटलेस जो है वो मतलब कि डेथ्स होती हैं, एंड दीज डेथ्स दे रिमाइंड अस दैट ह्यूमन बीइंग्स, दे आर मॉर्टल, दे डू नॉट लिव फॉर एवर.
सो शेक्सपियर जो है उसका थीम ऑफ मोर्टेलिटी प्रेजेंट करने का मकसद क्या है? ही एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट एज पार्ट ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ, कि जिंदगी का जो सर्कल है, लाइफ एंड डेथ जो है ये उस सर्कल का हिस्सा है, ठीक है। और वो लाइफ एंड डेथ को जो है वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव में भी दिखाता है, जब वो हैमलेट हमें कंटेम्पलेट करता दिखाई देता है कि भाई अगर ये इबादत के दौरान मर गया तो ही विल गो टू हेवन एंड ऑल हिज सिंस दे विल बी फॉरगिवन, और इफ ही डाइज while he is not praying or while he is committing some sin, so then he is going to go to hell. तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव में भी मॉर्टेलिटी और इमॉर्टेलिटी, डेथ, उसके बारे में हमें दिखाया जा रहा है। और सेकुलर पर्सपेक्टिव में भी, सेकुलर पर्सपेक्टिव क्या है कि ओफिलिया जो है शी चूजेस टू एंड हर लाइफ, ठीक है। नाउ if you are a true Christian, then you know that committing suicide is forbidden and you cannot commit suicide, ठीक है। now ओफिलिया का ये जो एक्ट है सुसाइड करने का, ये सॉर्ट ऑफ जो है वो सेकुलर टेंडेंसी की जानिब हमें लेके जा रहा है कि उसने क्रिश्चियनिटी को, ऑब्वियसली जब आप रिलीजियस टीचिंग को इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यू नो लॉन्गर बिलीव इन दैट रिलीजन, ठीक है। एंड दोज पीपल हु डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन दे आर कॉल्ड द सेकुलर पीपल्स, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव में भी डेथ आपको दिखाई गई है और रिलीजियस पर्सपेक्टिव में भी लाइफ एंड डेथ का सीन जो है वो आपको दिखाया गया है। Okay, the next important theme of play Hamlet is truth versus deception. ट्रूथ का मतलब सच होता है, डिसेप्शन का मतलब धोखा है, इजी वर्ड्स हैं। जो आइडिया है ट्रूथ वर्सेस डिसेप्शन का, ये पूरे प्ले के अंदर प्रिविलेंट है, जगह जगह पे आपको दिखाई देता है दैट देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, व्हाट अपीयर्स टू बी इज़ नॉट एक्चुअली व्हाट इट इज़, ठीक है। और हैमलेट के अंदर पर्टिकुलरली ये चीज़ हमें बार बार दिखाई देती है। और काफ़ी जो मेजर करैक्टर्स हैं, उनके एक्शंस जो हैं वो ट्रूथ वर्सेस डिसेप्शन का जो थीम है उसको प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्लाउडियस जिस तरीके से पावर में आता है, इट इज़ अ वे ऑफ डिसेप्शन, इट इज़ नॉट द वे ऑफ ट्रूथ। क्योंकि डिसेप्शन है ना, आपने अपने भाई को जो है वो रात को सोते हुए उसके कान में जहर डाल के मार दिया, और फिर यू हैव प्रोवोक द क्वीन कि वो आपसे शादी कर ले, एंड यू अब आप जो है वो खुद तख्त पे काबिज होके बैठ गए हैं, हालांकि तख्त जो है वो यंग हैमलेट का या फिर प्रिंस हैमलेट का बनता है, उसको तख्त पे बिठाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इट वाज द लस्ट ऑफ पावर। और उस पावर के लिए क्लॉडियस जो है वो डिसेप्शन का रास्ता इख्तियार करता है, धोखा देता है और पावर जो है उसको हथिया लेता है। इसके अलावा प्ले के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा करैक्टर्स दिखाई देते हैं जो कि जिनकी लाइफ जो है वो डिसीट की वजह से थ्राइव कर रही है। इसमें प्राइम एग्जांपल है पोलोनियस की। पोलोनियस जो है वो आप देखें तो अ, उसका एक्ट जो है वो पर्दे के पीछे छुपना, इट इज़ आल्सो एन एक्ट ऑफ डिसीट, के धोखा दे के उनकी उनकी बातें सुनना चाहता है। द वे ही ट्राइज टू यूज हिज डॉटर के वो हैमलेट का ट्रू स्टेट ऑफ माइंड जो है उसको जान सके, तो ही इज़ अ डिसीटफुल इंडिविजुअल। इसके अलावा क्लॉडियस जो है उसकी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दी कि ही इज़ अ डिसीटफुल इंडिविजुअल, कि किस तरीके से धोखा दे के तो उसने तख्त के ऊपर कब्जा किया है। और ये जो डिसीटफुलनेस है, जो कि धोखा देना है, इस धोखाधही के नतीजे में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस जो हैं वो इवॉल्व करती हैं ड्रामे के अंदर। फॉर एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल तो है पोलोनियस की डेथ जो है, जब वो हैमलेट और इसकी गर्टरूड की बातें छुप के सुनने की कोशिश करता है, और हैमलेट जो है ही रिकग्नाइजेज दैट देयर इज someone in the room hiding behind the curtain, so he attacks him and as a result Polonius is killed. इसके अलावा प्ले के अंदर वेरियस सीन्स हैं जो कि ट्रूथ वर्सेस डिसीट के थीम को लेकर आगे चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन द ओपनिंग सीन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द गोस्ट। गोस्ट जो है ही इज विटनेस टू ट्रूथ, हाउएवर द death, the actual death of King Hamlet, it has been presented in another way. So इसके अलावा गोस्ट की जो अपीयरेंस है, इसके हवाले से ये भी है कि वेदर द गोस्ट इज़ रियल और इट इज़
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेटन की, ये कोई शैतान की नुमाइंदगी कर रहा है। तो मतलब कि ये भी ट्रूथ वर्सेस डिसेप्शन जो है। और हैमलेट यकीन नहीं करता ना, आपको पता है कि हैमलेट यकीन नहीं करता गोस्ट की बात पे कि भाई, तो रादर वो उसको इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए कंफर्म करता है, ठीक है। सो मतलब कि ट्रूथ वर्सेस डिसेप्शन वहाँ पे गोस्ट की अपीयरेंस में भी मौजूद है। इसके अलावा जो हैमलेट के फ्रेंड्स हैं, रोजनक्रांट्स और गाइल्डनस्टर्न और रोजनक्रांट की प्रेजेंस जो है एल्सिनोर के अंदर, और जो उनका ट्रू मिशन है, इट इज़ आल्सो प्राइम एग्जांपल ऑफ ट्रूथ वर्सेस डिसेप्शन। नाउ दे आर द फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट, दे आर हिज यूनिवर्सिटी fellows, they have been spending time together, they are in the same class. However, they choose to be the स्पाइज ऑफ क्लाडियस, कि वो क्लाडियस के लिए जासूसी कर रहे हैं। सो अपीयरेंस जो उनकी है इट इज़ समथिंग एल्स, बट उनकी ट्रूथ जो है इट इज़ समथिंग एल्स, एंड द वे that they are adopting in order to spy on Hamlet, this way it is the way of deception. क्लाडियस जो है उसकी मोटिवेशन इन दोनों हैमलेट के दोस्तों को एल्सिनोर में लेकर आना, अगेन इट इज़ आल्सो डिसेप्शन, के वो ये चाहता है कि हैमलेट को डिसीव किया जाए और डिसीव करके उसकी जो रियलिटी है, जो उसका रियल स्टेट ऑफ माइंड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। इसके अलावा क्लाडियस की जो अपनी एग्जिस्टेंस है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस itself is prime example of a deception, because he should not have been there on the throne. Throne जो है वो हैमलेट का था, he deserved it, however it has been occupied by Claudius. इसके बाद द कंपनी ऑफ द प्लेयर्स, यानी कि वो जो एक्टर्स हैं, वो जो उनका प्ले है, इट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ डिसेप्शन। और हैमलेट का जो प्रिटेंड करना है कि आई एम नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, it is again furthering the theme of truth versus deception. His real state of mind, in his real state of mind, he's okay, he has no problem of insanity, however, he's pretending to be mad so that he can reach the truth of his father's death. Okay, the next important theme of the play Hamlet is thought versus action. Now, when we're talking about thought, we mean that you are thinking about doing something, and action is the actual action or the actual act of doing something. ठीक है। अब इसके हवाले से थॉट वर्सेस एक्शन के हवाले से इंटरमीडिएट के अंदर एक खूबसूरत सी पोएम है, शायद आप लोगों में से अक्सरियत ने वो पोएम पढ़ी होगी। पोएम का टाइटल है ओ वेयर यू गोइंग, ठीक है। सो वो पोएम आपने पढ़ी होगी, यकीनन आपको पता होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड एक्टिंग। सो अगेन, लाइफ जो है, लाइफ ऑफ थिंकिंग और लाइफ ऑफ थॉट वर्सेस लाइफ ऑफ एक्शन जो है, ये एक ऐसा थीम है जो कि थ्रू आउट द प्ले आपको दिखाई देता है। हैमलेट की अगर आप लाइफ को देखें, जो थ्रू आउट द प्ले जो कुछ भी हमें उसके बारे में दिखाई देता है, सो ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग एवरीथिंग थरोली, कि वो हर चीज़ जो है उसको डिटेल में सोचता है, वो एक्शन से पहले उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को सोचता है, उसके बाद वो एक्ट करता है, ठीक है। और हैमलेट की जो लाइफ है या जो उसका मिजाज है, उस मिजाज के मुताबिक ही फाइंड्स अ बैलेंस बिटवीन द टू थिंग, यानी कि थॉट और एक्शन के बीच में बैलेंस जो है वो फाइंड करना हैमलेट का जो है वो एक मकसद है इस प्ले के अंदर, ठीक है। शेक्सपियर जो है उसके मुताबिक, शेक्सपियर के मुताबिक कि जो लाइफ के लिए बेस्ट अप्रोच है, द बेस्ट अप्रोच टुवर्ड लाइफ इज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन थॉट एंड एक्शन, के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके थॉट और उनकी एक्शन जो है उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक दिस दैट यू आर ऑलवेज thinking and you're doing nothing, and it also shouldn't be like this that you are acting without thinking, ठीक है। ड्रामा का आगाज़ होता है जब, तो उससे हमें पता चलता है कि जो हैमलेट है, ही इज़
थिंकिंग लाइक क्रेजी इंडिविजुअल, और ऑन दी अदर हैंड जो उसके कंट्रास्ट में दो करेक्टर्स हैं, लियर्टीज एंड फोर्टेनब्रास, वो दोनों जो हैं वो अपोजिट नेचर के हैं। दे थिंक लेस एंड दे एक्ट मोर। और फोर्टेनब्रास जो है उसकी लाइफ या जो उसकी जो अप्रोच टूवर्ड लाइफ है, इट रिफ्लेक्ट्स दैट ही इज प्रोन टू एक्शन बिफोर थॉट, यानी कि वो एक्शन पहले लेता है और उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनको बाद में सोचता है। लियर्टीज जो है अगेन फोर्टेनबास की तरह, जब उसको पता चलता है कि उसका फादर हैमलेट के हाथों उसकी डेथ हुई है, सो ही डजंट think much. Rather, he decides that he is immediately going to take steps to avenge his father's death. कि जब उसको एल्सिनोर में दाखिल नहीं होने दिया जाता, so he barges into Elsinore with a group of people, और वहाँ पे क्लाडियस जो है फिर उसको यकीन दिलाना पड़ता है कि हम तुम्हारे फादर की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और यकीनन जो है वो तुम्हें इसका इंसाफ जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थीम इन दिस प्ले इज मैडनेस। मैडनेस आपको पता है कि प्रिवेल करती है फ्रॉम द मोमेंट व्हेन हैमलेट डिसाइड्स टू टेक रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ हिज फादर, और जो उसका प्लान ऑफ एक्शन है, मैडनेस उसका हिस्सा है, यानी कि वो मैडनेस को प्रिटेंड करेगा और आफ्टर दैट ही इज गोइंग टू टेक रिवेंज। और मैडनेस जो है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द करेक्टर ऑफ Prince Hamlet. Rather, in the play, we also see Ophelia going mad. Ophelia goes mad because of the death of her father Polonius, because she had great love for Polonius. And even in Claudius, we can find elements of insanity, the way he acts to kill his brother, his real brother, and uh, मैरी हिज सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो उसके जो एक्शंस हैं उससे भी कोई सैनिटी रिफ्लेक्ट होती हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, नाउ दिस थीम ऑफ मैडनेस इन द प्ले हैमलेट, इट गोज हैंड इन हैंड विद द theme of truth versus deception, because the madness of Hamlet is real or it is feared, यानी कि झूठ है। ये क्वेश्चन जो है इट रिमेन्स द पॉइंट ऑफ डिबेट थ्रू आउट द प्ले। क्लॉडियस जो है वो वेरियस प्लेयर्स को, वेरियस लोगों को यूज़ करता है ताकि वो हैमलेट की जो रियल स्टेट ऑफ माइंड है उसको डिटरमिन कर सके। द लास्ट मेजर थीम ऑफ दिस प्ले इज रिवेंज। रिवेंज जो है ऑब्वियसली द होल प्ले इट इज based on revenge, and there are three major revenge plots that are there in the play. The first is the leading plot that is related to the revenge of Prince Hamlet, that he is bent upon taking the revenge of the death of his father from his uncle Claudius. The second important plot of the revenge is related to Laertes. Laertes जो है he wants to avenge on the death of Polonius, his father, and Ophelia, that is his sister. Laertes के revenge plot के अलावा we have the third revenge plot that is related to the revenge of Fortinbras, who is the Prince of Norway. He also wants to take revenge from the state of Denmark. He wants to take revenge because his father has been defeated in the past at the hands of King Hamlet. So he has determined to avenge the defeat of his father at the hands of King Hamlet. So he is going to attack the state of Denmark. अब प्ले के अंदर वो सारे करेक्टर्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं रिलेटेड टू द एक्शंस ऑफ द रिवेंज, उनमें से फोर्टिन ब्रास वो वाहिद करेक्टर है जिसकी डेथ नहीं होती एज द रिजल्ट ऑफ हिज एक्शंस। अगर आप हैमलेट की एग्जांपल लें तो हैमलेट डाइज एट द एंड,
बिकॉज ऑफ हिज ओन रिवेंजफुल फीलिंग्स, अगर वो रिवेंजफुल फीलिंग्स ना होती तो ही मे हैव लिव्ड। और यही एग्जांपल जो है वो लियर्ट्रीज की है। लियर्ट्रीज भी वेंजफुल होता है, एंड वो जो उसके वेंजफुल पैशंस हैं, जो उसकी वेंजफुल फीलिंग्स हैं, वो उसकी डेथ का बायस बनती हैं। ठीक है, अब हम कहें कि हैमलेट की डेथ जो है वो डायरेक्टली हैमलेट के जो पैशंस हैं ऑफ रिवेंज उनका नतीजा है, तो ये बात भी शायद गलत होगी, क्योंकि हैमलेट अगर खुद अपने तौर पे जो रिवेंज लेता तो वो शायद इस अंदाज से रिवेंज लेता कि उसमें उसको कोई नुकसान ना पहुंचता, बिकॉज हमें पता है कि हैमलेट इज़ अ थिंकिंग इंडिविजुअल। वो हर एक चीज़ को प्रॉपरली प्लान करता है और प्रॉपरली जो है वो वेट करता है उस चीज़ का, एक्शन के टाइम का वो वेट करता है। लेकिन चूंकि हैमलेट की एग्जिस्टेंस जो है इट इज़ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ क्लॉडियस एज द किंग। सो क्लॉडियस जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स है behind the string of incidents that lead to the death of Hamlet। अगर क्लॉडियस जो है वो इसमें इन्वॉल्व ना होता तो जाहिर है वो सोर्ड जो कि हैमलेट की डेथ का बायस बनती है, जिस पे जहर लगा होता है, जहर आलूदा होती है, वो सोर्ड जहर आलूदा ना होती तो हैमलेट माइट हैव लिव्ड। हाउएवर पोलोनियस इज सॉरी क्लाडियस इज द ड्राइविंग फोर्स जो कि ड्राइव कर रहा है हैमलेट की इस डेथ को। और ये भी आर्गुमेंट पेश किया जा सकता है कि क्लॉडियस के जो एक्शंस हैं वो डायरेक्टली हैमलेट की डेथ का उसके डिमाइस का बायस बन सकते थे, और हैमलेट चाहे जो मर्जी है करता, घोस्ट के बारे में वो एक्शन लेता या ना लेता, क्लॉडियस ने अल्टीमेटली हैमलेट से जान तो छुड़ानी थी, बिकॉज ही हैड लस्ट फॉर पावर। अब प्ले के अंदर हमें हैमलेट की भी ग्रोथ दिखाई देती है और फोर्टिन ब्रास की भी ग्रोथ दिखाई देती है। फोर्टिन ब्रास जो है वो आर्मी को लीड करके रिवेंज लेने आता है, हैमलेट ऑन दी अदर हैंड उसके रिवेंज का तरीकाकार डिफरेंट है। ठीक है, तो उनके वेंजफुल जो एक्शंस हैं, ये वेंजफुल एक्शंस उनकी ग्रोथ का बायस बनते हैं। ठीक है, लेयर्टीज के बारे में भी अगर आप ये कहें कि ही इज आल्सो वेंजफुल करेक्टर, तो ठीक है, ही इज आल्सो वेंजफुल करेक्टर, ही इज बेंट ऑन टेकिंग रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ हिज फादर। हाउएवर जो उसका आखिरी एक्शन है, उस आखिरी एक्शन के अंदर व्हाट ही does is कि he forgives Hamlet and he asks for his forgiveness in return, because he knows that he has been used at the hand of the Claudius, and whatever he has done is not in accordance with the morals of the Christianity. So he'll be doomed if he does not confess. So he confesses and he seeks forgiveness and he grants forgiveness to Hamlet. So that is all for themes of Hamlet. So these were the important things that you need to be aware of. So I have tried my level best कि आपको इन चीज़ों से familiarize करवाया जा सके। Obviously in literature there are topics that are unlimited। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस प्ले के हवाले से बात करें, सो इस प्ले में द करेक्टर ऑफ हैमलेट, हैमलेट एज अ ट्रेजिक हीरो, हैमलेट द प्ले एज अ रिवेंज ट्रेजिडी। ठीक है, हमार्शिया या ट्रेजिक फ्लॉ क्या है हैमलेट का? ठीक है, वो लैक ऑफ डिसाइसिवनेस या उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो उसका ट्रेजिक फ्लॉ है। इसके अलावा जो हैमलेट का रिलेशन है विद हिज फादर, इसके अलावा यू could be asked to discuss Hamlet as a true Christian hero. Obviously, he is a true Christian hero. Then there is a question that is related to the significance of the play within the play कि जो माउस ट्रैप हैमलेट सेट करता है क्लॉडियस के लिए in the form of the play The Murder of Gonzago, दैट प्ले कि उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत जो है उसके ऊपर आप डिस्कशन करें। इसके अलावा हैमलेट की सोलिलकीज जो हैं दे आर आल्सो पॉइंट ऑफ डिबेट, उनके हवाले से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं।
पर्टिकुलरली एक उसकी सलील की है, टू बी और नॉट टू बी। तो टू बी और नॉट टू बी वाली जो है उसको आप उसका टेक्स्ट और उसका एनालिसिस जो है वो देख लीजिएगा, इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें दे आर अवेलेबल। सो टू बी और नॉट टू बी वाली सलील की, टू बी और नॉट टू बी का मतलब वैसे तो होता है ना टू एग्जिस्ट, नॉट टू बी का मतलब है टू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वेदर आई शुड लिव और वेदर आई शुड डाई। यहाँ पे जो ये उसकी सलील की है, इट इज़ मेनली कंसर्न विद द एक्शन, कि वेदर आई शुड एक्ट और वेदर आई शुड stop and take extra information into account and then act। ठीक है, तो ये उसके वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसमें वो अपने आप पे मतलब के कर्स करता है। तो ये सारे अहम पॉइंट्स हैं ऑफ डिबेट रिगार्डिंग दिस प्ले। so I hope that things, the picture regarding this play is very clear in your mind and you will be able to attempt these questions। ठीक है, so thank you so much for listening, take care and Allah Hafiz।